So yeah, recording is on now. So we are let's discuss about the risk management strategies. So this the cushion theory is there, where cushion strategy is there, where what we do, we divide the capital, we apply the checklist. Checklist is available for every trade to be taken. And before taking any trade, you should always see the checklist, and then you should generate a cushion. Okay, your first trade usually you should take first trade that only where you will be getting at least some profits. Okay, let's say you have as I was discussing, you have 50K capital and you have a risk appetite of 2000. So you should look for 2000 per day. Okay, you can lose only 2000 per day. If you lose more than that, you will close that app and terminal for that day, and you will come back again next time. So that is your like rule you are having. Now with a 2K risk appetite, what you will do, you will try to increase this risk appetite in the market itself. You won't give money from your pocket. Instead, you will try to increase this risk appetite from the market itself. Let's say you are taking any trade in Nifty and you are entering at, let's say, 90 rupees and your SL is at 80 rupees. It means you are having 10 rupees SL per lot. That means you will be losing 500 rupees per lot from this risk appetite. Let's say you are so what should you do? You should not spare, look, you should not use up all this 2000 rupees which you are going to as a you are taking the risk on. You should not use all this 2000 rupees at once. Instead, you should use only 1K for that particular trade. So what does that mean? That means you are allowed to take only 2 lots. Yeah, because in one lot, if the stop loss gets hit, that means you'll be losing 5K, and you have a risk appetite of 1K. That means you can go with 10 lots. Now, after going for going for 2 lots, what you can do, like if the trade, give me one more. So if the trade moves in your favor, and you earn even, let's say 5 points from this trade, let's say it goes from 90 to 95, what should be your primary aim? Because we are here like to increase this risk appetite for the day, especially during the first few trades of the day. What should you do? You should try to book at least one. Okay, if you book one lot, that means you have booked 25 rupees profit in that trade. And even if you don't trail the SL in that second lot, okay, still you will be losing only not 500, because in one that lot the loss will be 500, but you will be gaining 250 from other lot. So your loss will be only 250. That will protect your capital. Okay, that the risk appetite has not yet the risk margin which you are having, that has not yet blown up, and still you are having a chance to take another trade, and you are already in that trade also. Let's say that trade was good and that trade like worked, and that option went from 995 rupees to 100 or 110. So that means you will be earning a lot from this another second lot also, and at the same time increasing this risk appetite from 2K to 3K, 4K. And in next trade also, you won't be utilizing all of this risk appetite. Instead, you will be going with half or 1/3 of this only. So in that way, you won't be finishing all of your risk appetite on a single trade. Okay, always you can make very good amount of money in a single trade also, but at the same time, you should not put all your money in a single trade. Okay, because you can risk and you can lose all your money in a single trade also. That possibility is also there. So always think in probability of this only. Always decide what you are going to lose per lot if your stop loss hit. Okay, first you should decide what is the stop loss you are taking for that particular trade, and that stop loss should not be fixed for any instrument. Say it should not be like in Nifty you are going to take only 10 rupees SL or 20 rupees SL, or in Bank Nifty you are going to take like 50 rupees or 100 rupees SL. It should not be fixed like this. Instead, you should always decide the stop losses based on the pivots. Okay, and what is the pivot? We'll discuss about that in a while. Before, let me finish this. So using that question, you can deploy full capital later on,
and take the target first. Okay, whatever is the initial target based on OI data. Let's say OI data is saying that this particular stock is going to that level. Okay, if you read OI data correctly, you will be able to identify this which is the level we are expecting for any particular stock. So if that particular stock goes to that level, then you can like book at least half there and then let the rest run, because in most of the cases that stock breaks that level and goes upwards also. And always go for bigger gains. Okay, never ever close your trade in a single point. Okay, this was like 850 was the target for running ports, so now we can close that trade. It should not be your thought. If your entry was, let's say, 800 or 830, you should book half at 850 and then you should let the rest half run continuously, so that you can get the biggest gains. And TSL strategy should be there. You should use half of the cushion as SL initially, and trail book aggressively in half and use TSL in the rest half. TSL means trailing SL. And as I told you, actual picture with lots more new strategies and new stronger data points will be coming up in the webinar. So which I'll be sharing the link in the channel itself. Now let's discuss about the trailing SL based on the price action keywords. For that, we'll have to go to trading view again. So now here, what you have to do, let's just see this chart. Okay, let's take example of Bank Nifty itself of yesterday. Now, let's say you are trading in 5-minute time frame only. Okay, you can trade in any time frame, 5 or 3 or 15 also. This will work in every time frame. What you have to do, just let me open Bank Nifty futures chart. So here it is, so that it becomes more clear. And the lines there were for slightly disturbing. Now what you have to do, like Bank Nifty is falling. Even let's say you enter in the morning, I'll show you some scenarios where you can enter. The first thing is that you had bearish view in your mind. Okay, you were bearish in the EOD analysis itself, which you saw in ATK. All the stocks are showing short build-up. All the Bank Nifty customers are showing short build-up, and Bank Nifty itself is showing short build-up in futures OI data as well as options OI data. So what does that mean? You can enter in Bank Nifty futures in the morning itself. You saw this good red candle, although it is not very strong, but still you can enter here. If you enter here, your SL should be there. Okay, now what is happening? You are taking this trade and Bank Nifty is going down, but still you have not moved your SL because nothing kind of pivot is present. Okay, what is pivot? Pivot is a turning point. I'm not talking about the pivot indicator here. I'm talking about the pivot, which is a turning point. The literal meaning of pivot is a turning point. And the like hinges in the door, they are also called as pivot. So this is pivot. What happens? Price starts going down. Okay. And this pivot is formed. Okay. There was a pivot from where price has turned. Now we have another pivot at this point. This was one pivot. Now we have another pivot at this point. Then there is one pivot at this point, this point, this point. So what will happen if you keep on trailing your SL? Okay, based on these pivots, your stop loss will hit at some point. Okay, maybe at this point because you put your SL at this point, and because of IB or like theta decay, because of wall crash, your pivot may hit at this point, but you will be able to like capture this moment. Okay, the job of SL is to get hit when the trend ends. Okay, now if you are, let's say, trading in futures only, so what will happen? Ki futures may you won't get IV crash or anything, so eventually your stop loss will get hit at this point. Okay, if you are getting confused with this price action thing or these candles, you can use this also. Just use this. Okay, so based on this lines only, this turning points only, if you put your stop loss, then you will obviously be able to trail it to maximum possible point. Because the structure, like the structure of, let's say here, you entered here and your stop loss was there. Now price went up to this level, again came down to this level, again went up. You can trail your SL up to this point. So which will eventually get hit. Okay, and you will be able to go out with break even.
But again, if you enter at this point after a good consideration, if you enter at this point, you enter it here and your SL is here. So that SL will not get hit. And again, the prices will go up and you will keep on trailing your SL. And eventually your SL will get hit at this point. So the shorter time frame, the more shorter time frame you use, I usually use 3-minute time frame to go for this pivots. Okay. And this helps you when you are riding a trend, especially like this also. And whenever you are riding a trend, like in this example also, if you were trailing using this pivots, so it won't get hit unless like at around this point or this point. Okay, you will keep on trailing and eventually your SL will get hit at this point or this point, which is a pretty good fall to capture. Also, you can go for if any stock option is there and a very volatile move comes in that particular stock options, then also you can trail your SL based on 3-minute candle slow also, 5-minute candle slow also. So that is the method of trailing based on the pivots. There is one question which is thanks for answering this. Is it advisable to buy stock options in the last week of monthly expiry 3:30? I told you na last 3 days mein to we don't have to buy at all. Like an initial 2 days of that week, theta decay will be there definitely, but at the same time, gamma is also there. Gamma moves are also there. So last week, what happens now? Very explosive moves comes in that monthly stock options also. So if you are very good with your direction finding and if you have very good conviction, then you can go and but not necessarily. It should not be done always. Okay, because theta decay will be very high. Yeah, I have a lot of scanners. Actually, there is one scanner which is used for EOD also, which is based on futures Y data. And then I put up options Y data in that. And then I see the price action and decide whether you can go through that trade or not. Now let's so what I was like, there was one question regarding expiry. Na? A lot of also, whenever you are using, let's say you are using any option instead of futures. So in option, there will be 2-3 things. First one will be theta, and then the vol crash will be there. And IV will crash down. So vol crash will be there, volatility crash because of IV going down. So you will have to take care of all those things also. Yeah, it's better that you take a hit in that SL whenever IV is getting down. So you get hit in that trailing SL and get out with the profits instead of holding that option because the prices will go down. So you will have to correlate your option pricing with this price action weights keywords and then continue your trades. Now, so expiry का जो discussion था, see on the day of expiry, what happens? Like in last half an hour, 1 hour, we get a range formation. Okay, we get a clear-cut range. In the Telegram channel also, I was telling you last week, because this week the expiry was quite difficult because what happened? Like range formation is there. And usually what happens, like in the free Telegram channel, I told you guys the 400 up to 500 range is there, which was there. But based on the position of the big players, okay, they were making position in these two ranges. A lot of calls were being sold at 39,500. A lot of puts were being sold at 39,400. So that position was there, but the position got changed eventually. When the position got changed, price started to go up, which is not usually the case with the expiry. Okay, whenever a range is formed, let's say a range is formed 39,400 and 500. So what happens if that range gets formed at around 1:30 or 2 p.m. So it holds usually for the next 1 hour, 1.5 hours, because usually the prices are not that premiums are not that high that like other operators will come and make the stop losses of the sellers got hit.
So that is not the case. But yeah, still, if that is happening, like 39,500 call sellers were exiting their position and building up their position at the higher level at 39,600 and even 700 also. So that was apparent in the OI data of like Bank Nifty at that time. So if that is present, then you can go for long trades. And whenever that range gets broken, then you can go for long trades. But if that range does not gets broken and if that range gets holded, and if they are building their position in both the strikes, like upper range as well as lower range, then you can continue to take reversal trade based on that range. If that range is there, let's say 39,500 and 400 range is there, so you can continue to take reversal trade based on the range. I will update this range in my free Telegram also, free Telegram channel at 1:30 to 2 p.m. on every expiry day. Okay. This holds true for Bank Nifty as well as Nifty and Fin Nifty also. So if the range is there and if that range is getting respected, okay, for the respected thing, you will have to see the data also. You'll have to see continuous live data of these two strikes so that you can get an idea about whether any unwinding is happening or not, or like if the buildup is happening or not. Okay, if buildup is happening, then most probably the range will hold and price will fluctuate in between only, won't break this range and go away. So which is the usual case with the expiry. Okay, be it Bank Nifty, be it Fin Nifty, usually this happens because last way what happens now, they don't have that much premium left that they will be taking efforts to take a directional move in the Bank Nifty or Nifty. Okay. So I usually like there is one question ki suggest a strategy that can be backtested and implemented using algo in option buying. Algo thing na, when I was trying this algo thing, but what happened na ki the data reading skill which I have or which I teach in the webinar or anything, that is something like more of a lot of discretionary things are there because we have to take care of a lot of things. Just say let's discuss about yesterday's fall. So a major part of yesterday's fall was because of Reliance also. Okay. Reliance was not taking part in the upside moment. Instead, it was like Infi and other were stagnant. But Reliance was looking very weak yesterday. And this one of the reason for this is like the fight between Adani and Ambani. Okay. Yesterday we got the news that Adani Group has become so big. So the investor they showed discussing the Reliance thing and it went down and all. So this thing which we have is a quite discretionary thing, and all those things are very hard to enter in algo and all. So whatever data reading which I am seeing, like let's say if I am seeing this chart and deciding that like let's say if I'm seeing this chart and deciding that key, this is chart of Nifty and Nifty is looking bearish. So that is based on a lot of other factors based on not just on numbers. Okay. By seeing the positioning of these candles and correlation with each other. So that's why algos are quite difficult to make right now. But things are in the process. If anything comes up, I'll inform you all. Okay. When Nifty is risky or not is better than Nifty for profit. Just asking, has never taken a trade by planning feature. I'll give some trades in Fin Nifty if any good solid trade comes up in Fin Nifty, and then I'll share that with you, and you will see for yourself. Fin Nifty is right now it is very risky for option sellers, and it is very good for option buyers. If I may say, because Fin Nifty may what happens now, a very big range is there. 100-point range is there in Fin Nifty. Not like it's not like Nifty where we have only 50-point range. It is Fin Nifty is having 100 points range. So, जो 100-point range है ना, that gives a lot of problem to the option sellers. So they have to cover their position a lot, and at the same time they will have to make their position in opposite side, which happens a lot in Fin Nifty, and that gives a very good opportunity for option buyers. Although one problem is there in Fin Nifty, ki market orders are not allowed yet.
we have only limit orders. So that is something problematic, but still Nifty is a great instrument to trade at least as of now. My trading view is paid. There's one question, sir, is your trading view paid or free? I'm using paid trading view, guys, and this is Chrome only. I'm not using Vivaldi app or anything. Can you share that screener here? I'll share that in the Telegram channel itself, free Telegram channel. Bank Nifty or Nifty is better for profit. No, Bank Nifty is risky and high volatile, but easy to monitor. See, this is a very good question, actually. Let me answer it in somewhat detail. What happens? Bank Nifty constitutes mainly of HDFC, ICICI, SBI, and then Kotak, and then Axis. Other banks are also there, but mainly these five banks constitute Bank Nifty, and that too HDFC and ICI holds most value, and then SBI is there, which is a public sector bank, and Kotak and Axis, all of them around 11, and they have 21-22%. Now, Bank Nifty is a major part of Nifty. Okay, so if you draw a circle of Nifty, so Bank Nifty will come under this, but that's not so the case for Bank Nifty. So for tracking Bank Nifty, although you have to keep an eye on Nifty also, but for tracking Bank Nifty or for deciding the direction of Bank Nifty, if you track the Y data as well as direction of these banks only, then it will be more than enough. But for Nifty, what you have to do, you have to keep tracking these banks along with Reliance, along with HDFC, and then NP and TCS also. So if you track all these 4 stocks along with these 5 stocks, then only you will get a clear picture about Nifty. Okay. Whenever you are like, I create these screens, like these 4 screens are there. So like if I'm trading, let's say Nifty, so what will be there? Reliance will be there, Infosys will be there, and HDFC will be there. And obviously, I'm taking Nifty in a different chart. What I will do here, I'll do instead of Nifty 50, what should be there? Bank Nifty will be there. Okay. So if it happens like one day it was happening, every stock was stable, Infi was stable, HDFC was stable, Reliance was stable, but Nifty was continuously falling down. Okay. And the reason for that was Bank Nifty was falling. So that's why what is important is that you keep tracking Bank Nifty also along with other Nifty constituents. And to answer your question, because tracking 5 stock is easy, Bank Nifty prediction is slightly easier than Nifty. But at the same time, because Bank Nifty is very volatile, and everybody has interest in Bank Nifty, and a lot of liquidity is there. So seller also come in there, and sellers are always against us. So they keep manipulating Bank Nifty also. So the volatility is very high. So risk appetite should be slightly higher while trading in Bank Nifty. And at the same time, the reward which we get, that is also usually high in Bank Nifty. But I would suggest if you are a beginner, you don't have very much expertise, then you should go for Nifty only. Okay, Nifty only, and for at least 6 months to 1 year, then only go for Bank Nifty. And what I usually do is like I trade in both Bank Nifty and Nifty. And for the reason for them is like if let's say we have a positive Y buildup, okay, that means we have a bullish Y buildup in the options of both Nifty and Bank Nifty. So in that case, what I will do, I'll choose which is looking more strong in both of them, okay, compared to each other. Like if Nifty is looking more strong, then I'll go along with that. If Bank Nifty is looking more weak, and if market starts falling, then I'll go with Bank Nifty. Look at this, you'll get an idea. This is Bank Nifty's chart of yesterday. Yeah, here it is. This is Bank Nifty's chart of yesterday. Let's see the spot chart, you'll get more clarity. So Bank Nifty was trading at around 39,500 level, which is a very important level. Now it was trading at that level. But look at, compare this with Nifty. This is Bank Nifty's chart. Compare this with Nifty. So by looking at this chart, you can say, yeah, Nifty was looking more strong compared to Bank Nifty.
because it was trading at its opening price only, and yesterday's high region only. It was trading around that region only. But Bank Nifty, what it did, it opened, although it opened above yesterday's high, but it quickly went down and it was trading at much lower level. So that means the Bank Nifty was looking more weaker than Nifty yesterday. And if market falls, which it did, so I will be going with Bank Nifty rather than Nifty. So which is that is my understanding, and I do this. Okay, whenever like if any one of them is more weaker than other, then I'll be choosing that for short trades. If any one of them is more stronger than other, then I'll be choosing that option for that index for long trades. Acha, please explain a strike selection on index option buying, and do we need to change on day wise on weekly? So yes, definitely we need to change it. I discussed about that during that time also, but maybe I was going fast, so it was not apparent. So what should we do on let's say you are trading on Friday and obviously Monday, and then Tuesday, Wednesday. So on Thursday, it is mandatory that you have to go for ATM. Unless you have very strong data or you are going for a very high risky trade, जैसे hero zero trade, they are usually risky. So वहाँ पे we go for slight OTM, and if that becomes ATM, because if let's say any slight OTM is trading at around 10 rupees, and if that becomes ATM or in the money, that option will explode. Okay, it will become 20, 30, 40, 50 rupees like that immediately. But for other days, like this is applicable for ATM or in the money. In the money, what does it in the money means? Let's say if Bank Nifty is trading at around 39,500, then you go with, if you want to buy puts, so you go with 39,600 puts or 700 puts. Okay, on the day of Thursday. But any other day, if you are trading, then ATM is enough. And Friday, Tuesday and Wednesday, ATM is enough. Especially Wednesday ka first half, Wednesday second half mein you can go for in the money only. And Friday and Monday you can go for slight OTM, not very deep OTM, slight OTM. बस अगर जाना है, if you go for slight OTM only. So yeah, if you go for slight OTM, what will happen? If any OTM becomes ATM and then in the money, then the option prices will explode and you will get biggest profits. But at the same time, we like talking about yesterday, we were trading at 39,500 was there, which was in front of my screen. Because of this breaking of that region, I was tracking this from here only. So when it broke, we went with 39,500. That's also okay, but never go for very far OTMs. Okay, it should not be like कि आप देखोगे at the end of the day it will look like कि हाँ जो सबसे ज़्यादा gain हुआ होगा वो 39,000 का puts का हुआ होगा. That would have been trading at very low prices at the time, and that would have increased exponentially. But that's not always the case. Okay? After a fall or after market hours, it's very easy. But before that, it's quite difficult to predict what is going to happen, up to which this level is going to happen. So always go for slight OTM only, not very deep OTM. CPR, no, I don't use CPR, central pivot range. I don't use it. Please share the PPT. Yes, I'll share that. How the option target and stop loss determine in terms of rupees. You multiply that with the lot size, then you will decide that. How do you get the day break in chart? Chart pay usually the levels are there now already. Levels are drawn here. So वो जब होते हैं तब फिर we get that. And जो lines कहाँ से draw हुए? So I don't like erase my lines, whatever I have. So
Actually, there was one more topic which I should have discussed, which is like support and resistance formation, but that I'll discuss in the webinar. So now what happens, like support resistance draw करने के लिए based on the price action, what is the max, there are few criteria, there are 7 criteria actually. So one thing is that key, it should be very apparent. Okay, it should move, drastic moves should be there, very apparent drastic moves should be there, and it should have been tested multiple times, support converted into resistance, all those things are there. So look at this point. If if you look carefully, you can see that price move drastically from this point. So we'll mark that level. And if you're looking carefully, you can see that, yeah, it is trading at around 39,400, approximately at that region, or 350 like that. Similarly, then we'll mark another line, which is this, because price went down from here, and this comes up to 39,500. Okay. You can clearly see how the price action correlates with the big round numbers. Yahan pe bhi we have 39,675, which is approximately 39,700. Price return from here also 39,800, and then we'll draw one line at this point also, because price return from here. So all these lines will act as a reference point for next time also. You can see यहाँ पे भी क्या हुआ, price went down from 500, 39,500 से नीचे ही आया, and that same 39,500 level was acting as an important support for Bank Nifty on yesterday, and when it was broken, it went down. Okay, while trading in Bank Nifty or Nifty, if you want to look for the levels, then always go for a spot chart. Spot charts will give you important level. जैसे यहाँ पे you can see 39,500 was being respected, and when it broken, it went down drastically. But futures chart में that was not the case. Futures chart में it was trading 50 points higher. So futures chart को क्यों देखना है? Futures chart should be seen to get the volume. Okay, look at the volumes. Although we are having volumes in the like spot chart also, but that is a aggregate volume of all the Bank Nifty constants. This is not that useful for us. Instead, we will be looking at the Bank Nifty futures contracts volume, which will give us more accurate idea. Sir, if possible, please upload the video on YouTube. I have missed good part in the second half due to table. Yes, sure. I'll do that. Sure. Don't worry about that. I'll upload whole of the webinar in the YouTube. I meant that light blue line vertical one. So there is one comment which is appreciate your time. Thank you so much. I was not getting any good comments from the beginning today. Thank you so much, Anshu. Light blue lines, vertical ones. Which one, Mahesh? I do not get you. Yes, to track volume, we should refer to future chart. Suppose we are trading Nifty, do we need to check global market at the same time, or if yes, what we should prefer? I don't check global market at the time of our markets trading. Usually, I see them at night only for once to get an idea about the opening. But what will happen after the opening or during intraday, that gets decided by our markets only. That gets decided by our markets Y data only. So I don't see world market during market hours, our market hours. Live market trading, there are few videos in the YouTube, like my videos in my channel, just see them. And if I take live market trading on any like in future occasion, I'll upload the video. Although I do live market trading with the webinar attendees to get them an idea ki how to deploy the strategies and how to trail SL and all those things. कॉल ले लेता हूं अगर प्राइस गिर रहा होता है और स्टॉप लॉस नहीं लगा होता तो मैं पैनिक में आगे पुट ले लेता हूं, फिर दोनों में मैक्स लॉस में ही क्लोज होता है. हाउ टू वर्क ऑन दिस प्लीज? आई हैव लॉस्ट ऑल माय कैपिटल, प्लीज हेल्प. सो अभी व्हाई डू यू टेक कॉल व्हेन प्राइस इज गोइंग डाउन? As this is the problem ना, this is problem I am shouting about from the beginning itself. ठीक है, जैसे there were few people who were telling कि sir why you are talking about Greeks, everybody knows about them.
That is the main problem. Everybody has listened about Greeks, but nobody applies them during live market. ठीक है, आप समझो कॉल्स लेने का तो कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज डेल्टा इज ऑलरेडी अगेंस्ट यू, एंड एट द सेम टाइम इफ यू बाय अचानक से नीचे आ रहा है, और उसके नीचे आने के बाद बिकॉज आपने कॉल लिया है एंड देन कॉल बिकम्स गोज इन द लॉस बिकॉज ऑफ फॉलिंग ऑफ द मार्केट, एंड देन अगेन पुट्स यू बाय पुट, सो उसके बाद क्या होगा, मार्केट फॉल होना बंद हो जाएगा बिकॉज आप काफी लेट हो चुके हो, तो मार्केट फॉल होना बंद हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ आईवी क्रैश, वॉल क्रैश, बोथ योर ऑप्शन विल लूज देयर वैल्यू, तो दोनों में लॉस होगा। सो ऑप्शन बाइंग में तो कभी ऐसा करना ही नहीं कि दोनों एक साथ खरीदना ही नहीं है, बिकॉज बहुत ज्यादा चांस, बिकॉज थीटा इज एक्टिंग अगेंस्ट अस एंड आईवी इज एक्टिंग अगेंस्ट अस, तो सारा का सारा प्रॉफिट जो है चला जाएगा। ओके, सो इसलिए इसको बिल्कुल नहीं करना है। Instead, you should go for only, I would suggest if you are in very deep losses, I would suggest stop trading for some day and go for like learn the basics first, then come back. Future chart में बता दिया, global market answered. I will join the program. Thank you Gokul. Abhiram is saying we liked your teaching. Thank you so much Abhiram. Actually क्या है ना, what is the situation here, like for the first time I was dealing with such a big crowd. ठीक है, at one point we had like around 650 people in this 650 people were there in this meeting, so it becomes very difficult to see the messages and answer everybody, है ना? Right now we are having very less number, 150 or 200 people are there in this afternoon session, because after the Y data thing got over, now everybody lost interest and they left the meeting. And I did not had the time to answer their queries at that time. So that's why. Otherwise, when I take the session in the webinar, like consider the questions and one-to-one answering will be there. Even in Elite Club session also, when I take that session at 9:30 in the evening, so वहाँ पे भी I answer all your queries personally. But यहाँ पे it was very difficult to manage all those people and all those things. So I'm really sorry for that if I was not able to answer any of your questions or anything. And same वही चीज है, मतलब in even in my Telegram also I'm getting a lot of, sorry, Twitter also I'm getting a lot of messages. तो वहाँ पे भी बहुत मुश्किल था सबको DM में reply करना. It was very difficult to reply each one of you in the DM. So that's why I was not able to do that there also. So my apologies for that that if I missed someone. And Subham is saying, sir, why not Nifty chart itself for volume? Why future chart? Nifty में volume पहले तो रहता नहीं था Subham. Now they have started, only TradingView has started to give volume in Nifty, and that too is aggregate of all the constituents of Nifty. It is not that reliable, okay, because everybody sees the futures chart only for the volume. So what everybody is doing will have to do that only. You know, this is not that reliable. Yeah, if you are a beginner, there's one question Amit is asking कि Bank Nifty, do we trade in ATM mostly if you are an option buyer? Definitely. अगर आप option buyer, मतलब if you are a beginner, go for ATM only. But if you are a pro and if you know that this thing is going to come to that level, तो फिर आप वहाँ पे आप अपना थोड़ा सा OTM buy कर सकते हो. जैसे few days back we took one trade in BHEL. ठीक है, BHEL पे हमने ट्रेड लिया था. Let me show that to you. We bought some OTM options in BHEL few days back because BHEL was, the Y data of BHEL was actually very bullish for 2 days. तो यहाँ पे मैंने बोला था, and we took that trade and we holded that trade for 2 days because like half of month was remaining, so 330K was not that good, not that big a issue at that time. And eventually we BHEL went upwards like this. Okay, we had actually bought 56 and 55 rupees option in signal channel. Okay, and it went up like this. So our options got doubled and more than doubled in the value after that moment. Monthly option buying strategy. I don't usually do monthly option buying, Sudarshan, because the reward is not that great in that.
Okay. As an option buyer, I'm looking for maximum profits only. I was the day break lines on TradingView. Is it only on paid version? Like after August 19, there is some vertical blue region. So it is there in, I think, every TradingView. I don't know. It is not present in your TradingView, guys. I think it is present everywhere. These blue lines, Mahesh, which you are asking about, they are present in every TradingView version, I think. I don't know about that because I have right now I have the paid version. Sure, Gokul. Sure. Just go through that website. Gokul is saying he wants the elite. So elite club is something like you will have to go for signals as well as elite club if you want to go for discussion. Okay. You should not just go for elite club only. Elite club is only for discussion. So just buy signals and then buy elite club. You will be getting discussion as well as feed ideas from signal channel. TCT4, yes. Coupon code is TCT4. Great webinar. Thanks a lot. Thank you, Sanjeev ji. Thank you so much. No problem, Dinesh. Actually, there was some technical difficulties, so we could not enter everybody at that time. I'll be uploading that later on. Okay. Rajnarayan is saying invaluable session indeed, sir. Hats off to you. Many thanks. Thank you so much, Rajnarayan. This really means a lot. Okay, because a lot of efforts was went to creating these things and taking this webinar. Thank you so much. Thanks for your guidance. I have been following you from the beginning. You are awesome. Thank you again. Thank you so much, Fardeen. अच्छा, it is not available in free. Okay. तो वैसे इसका कोई यूज नहीं है, बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, ये उल्टा डिस्ट्रैक्टिंग लगता है। सेटिंग वेटिंग में होगा कहीं पे, मतलब कुछ खास ऐसा है नहीं, उसके लिए परेशान मत हो। ट्रेडिंग व्यू का फ्री वाला भी बहुत बढ़िया है, फ्री में भी बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है, तो फ्री वाले से ही चलो आप। ये बस ये एक साथ मुझे चारों देखने थे ना, इसलिए मैंने पेड ही लिया है। अगर पेड किसी चीज का लेना है तो सिर्फ आई चार्ट का मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, अदरवाइज नो नीड ऑफ गोइंग फॉर एनी अदर पेड। संजय टांग इज सेइंग कि सर प्लीज इंट्रोड्यूस 6 month ईयरली एंड लाइफ टाइम प्लान। थैंक यू सो मच संजय, थैंक यू सो मच फॉर दिस। Please type the code in chat, sir, or in Telegram group, please. The code is TCT4, and I'll lose. Amazing webinar, lot of value addition. Ready to take your course. Thank you so much, Ravi Shekhar. And trust me, guys, this was just a trailer. मतलब अब मैं 4 या 6 घंटे में इतना सारा नहीं बता सकता, ठीक है। A lot of things are there. मैंने आज आपको एक पीपीटी दिखाया है. I have 10 PPTs like that. Okay. And a lot more examples are there. More than 150 200 examples are there. So you may be thinking that I have shown you only the good trades now. I'll be showing you every kind of trades, because after you join this webinar you will be getting and like enrolled in the Elite Club group also, as well as signals. So you will getting trade in real time from me, and in the evening at 9:30 you will be getting that discussion from me, where I'll be in front of you and I'll be answering all your questions कि सर ये ट्रेड क्यों लिया, क्या लॉजिक था इसके पीछे, उस सब चीजें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, और आपको ट्रस्ट मी, यू विल गेट a lot of value from there. Already more than 80 people are there, है ना। In the signal channel more than 100 people are there, and in Elite Club group more than 80 people are there, and they are all very satisfied. Actually they were आज सुबह ही एक मैसेज आया, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, like there was one message कि all the best sir for today's webinar. I have a strong feeling that in coming days success will bless you like never before. Your efforts are really commendable. That was the message from Ravi, and which is Elite Club group member.
सो दिस काइंड ऑफ सपोर्ट इज देयर. सो ट्रस्ट मी, एक बार भरोसा करके देखिए. और मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यार स्टॉप लॉस हिट नहीं होते, स्टॉप लॉस हिट होते हैं, लेकिन जो स्टॉप लॉस हिट होते हैं बहुत छोटे हिट होते हैं, और जब प्रॉफिट बनता है बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स बनते हैं. ठीक है. यू मस्ट हैव सीन दैट ट्वीट ऑफ माइन, है ना, जिसमें एक वो बताया था हमने, जैसे ये है, लेट मी शो दैट टू यू. वेयर इज दैट, लाइट क्लब ग्रुप में है. गिव मी वन सेकेंड. या ये देखो आप, इज इट विजिबल टू यू? या हियर इट इज, यू सी दिस. तो ये ट्वीट पे भी है, ट्विटर पे भी आप लोगों ने देखा होगा, ये है. सो व्हाट इज दिस, दिस इज लाइक अभी ये लास्ट जुलाई के एंड में और अगस्त में मैंने जो भी ट्रेड दिए थे, बीटीएस ट्रेड दिए थे, उनका ये परफॉर्मेंस है. पहला ट्रेड दिया एचडीएफसी बैंक में पुट बाय करने का, उसमें हमारे लॉस हो गया, 15% का लॉस हुआ. ठीक है, 1300 रुपये का लॉस हुआ. नेक्स्ट ट्रेड मैंने दिया 21 तारीख को परसिस्टेंट का, उसमें जो है हमें प्रॉफिट हुआ 19,500 का. ओके. तो ये चीज है, लॉस जब हो रहा है 15% का लॉस हो रहा है, और जब प्रॉफिट हो रहा है तो 47% का प्रॉफिट हो रहा है. और ये जो ये डायग्राम है, ये पूरा टेबल है, मैंने नहीं बनाया है, ये मेरे उसी ग्रुप के एक मेंबर ने बनाया था. ठीक है. एंड ही शेयर दैट इन द ग्रुप इटसेल्फ. कोफोर्ज का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 52%. ठीक है, हमने जो कैपिटल डिप्लॉय हुआ था 6,300 फॉर दिस, एंड दैट वेंट अप टू लाइक 9,700, एंड द प्रॉफिट वाज 33,000. सिमिलरली आईएक्स, इसमें 50% लॉस हुआ, दैट वाज द बिगेस्ट लॉस. और हमारा जो, बिकॉज ये मंथ का एंड था बेसिकली, तो इसमें ऑप्शन मतलब अगेंस्ट में ओपन हुआ तो एकदम ही पूरा ही प्राइस चला गया. स्टिल वी वर एबल टू मैनेज दैट ट्रेड, एंड वी एग्जिटेड विद द लॉस ऑफ 37,000 रुपीज, एंड विच इज 50%. यहाँ पे देखो मैकडोवेल में 100% का प्रॉफिट हुआ. वी बॉट दैट पर्टिकुलर ऑप्शन एट 6,250, एंड 12,500 में हमने बेचा उस ऑप्शन को, 100% का प्रॉफिट हुआ. देन अगेन 15% लॉस यूबीएल में, एसआर ट्रांस में 102% का प्रॉफिट. ठीक है, 600 रुपये का, सॉरी 42 रुपीज वॉज बाइंग प्राइस, एंड 85 में, ये तो मैंने डिटेल में समझा दिया. स्कॉट्स में 22 रुपये में बाय करके 45 में बेचा है, 104%. देन गुजरात गैस 41%, लुपिन में हमने जीरो में निकले, बर्जर पेंट में -6% लॉस हो. ये सारा रिजल्ट बेस्ड ट्रेड है. हमने रिजल्ट आने के पहले पोजीशन लिया था, रिजल्ट आने के बाद तुरंत एग्जिट किया, या फिर वी एग्जिटेड आफ्टर सम टाइम विद ट्रेलिंग एसएल. ओके, एवरीथिंग वाज गाइडेड बाय मी ओनली इन द टेलीग्राम चैनल. सो दिस इज प्रेजेंट देयर आल्सो. टेलीग्राम चैनल में सारा प्रेजेंट है, और उस पे भी है, ग्रुप पे है, एंड ये उन्हीं का बताया हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं है. तो दिस इज द थिंग विच ऑपरेट इन. आई एम नॉट सेइंग कि आप आओगे तो यही चीजें होंगी, कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट भी मिल सकता है, लॉस भी हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा प्रॉफिट की ज्यादा रहती है. वेन एवर वी आर इन प्रॉफिट वी लुक फॉर बिगर टारगेट्स. सो दैट इज देयर. एंड नेक्स्ट रिजल्ट सेशन जब भी आएगा तो फिर उसमें हम फिर से ट्रेड देंगे, एंड अलॉट ऑफ डेटा रीडिंग गोज फॉर दैट ऑल्सो. ठीक है, जो रिजल्ट बेस्ड ट्रेड है उसमें बहुत ज्यादा डेटा रीडिंग लगता है, एंड अलॉट ऑफ like practice is required. So all those things will be there, and in webinar matlab I take 3-4 hour session on result based trade only, and then 3-4 hour session for expiry trades, कि हाउ टू टेक एक्सपायरी बेस्ड ट्रेड. जो 10 रुपए का ऑप्शन 40 रुपए में क्लोज हुआ ना, उसके पीछे कम से कम 10 बातें सोचनी पड़ती है, तब जाके वो उतना क्लोज होता है. ठीक है, तब जाके उस टाइप के ट्रेड्स बनते हैं. तो ऑल दोस थिंग्स विल आई विल शेयर विथ यू ऑल इन द वेबिनार. मेरी आदत है, मतलब उस वेबिनार में मैं कुछ भी नहीं छोड़ता, बिकॉज हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि थोड़ा प्रीमियम चार्जेस हैं, बट वो सब बिगनिंग से ऐसा है. आज तो आप बहुत सारे लोग, आज तो आप 650 लोग मेरी बातें सुन रहे हो. एक जमाना था जब मैं इस टाइप के वेबिनार लेता था तो मुश्किल से 100 लोग भी नहीं रहते थे, तब भी चार्जेस यही रहते थे. ठीक है, और तब भी लोग देते थे, तब भी लोग आते थे. एंड अभी तो वेबिनार काफ़ी अपडेट हो गया, बहुत सारे नए एग्जांपल हैं, काफ़ी सारी नई स्ट्रेटेजीज हैं, बहुत सारे नए स्कैनर्स हैं. जो जनवरी फेब में मैंने वेबिनार लिया था, उससे लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन इम्प्रूव्ड. सो इट विल बी वेरी यूजफुल इफ यू ज्वाइन. And even if you are not able to join for any way or anything, I'll keep on conducting these free webinars. कुछ तो वैल्यू ऐड करूंगा ही, है ना. तो प्लीज डोंट हेट मी. ठीक है, और कुछ कुछ आंसर्स और दे देते हैं. There is one question which is taking such length content coverage appreciate your efforts.
Technical glitches are beyond our control. We understood your passion and sincerity. थैंक यू सो मच शत्रुघ्न. एक्चुअली टेक्निकल ग्लिचेस इसलिए हुए ना कि इतने सारे लोग हैं कि जो मेरा पर्सनल जूम अकाउंट है उससे ये नहीं हो पा रहा है. दिस जूम वेबिनार वाज फैसिलिटेटेड बाय रिगी, तो उनको कांटेक्ट करना जब बीच में प्रॉब्लम आया फिर उन्होंने इंटरवीन किया, ये इसमें थोड़ा टाइम लग गया. दैट्स वाई, क्योंकि 600-700 लोगों का परमिशन नहीं देता जूम. मतलब उसके लिए रिगी वालों को भी जब मैंने रिक्वेस्ट किया कि नहीं मुझे अपना वेबिनार कंडक्ट करना है, तो जब उन्होंने देखा कि यार बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो फिर उन्होंने नया लाइसेंस परचेज किया. दे परचेज ए न्यू लाइसेंस फॉर दिस एंड दे हेल्प मी विथ ऑल दोस थिंग्स. सो अ लॉट ऑफ एफर्ट्स गोज फॉर दिस थिंग्स. अगर कल रात को मैं मतलब लिटरली आई वाज मेकिंग दीज पीपीटीज एंड ऑल टू 3 AM in the night. TCT4, yeah, it is correct, Raj. Please send the link to join the course. That is available in my site. I'll share that. Deciding the tomorrow will be gap up or gap down. That is decided by the OI data of last like 3:15 में जो भी डेटा डेवलप होता है ना इन नए बोथ बैंक निफ्टी निफ्टी में दिन भर का जो भी डेटा पोजिशनिंग रहता है एज वेल एज ऑप्शंस वाइज डेटा, तो वो एक इंडिकेट करता है. दैट इंडिकेट्स टुवर्ड्स वेदर इट्स गोइंग टू बी गैप और डाउन. Which one is better, trading view or charting? Trading view is like both are totally different platforms here. Trading view is for only for charts formation, chart के लिए है. Charting तो अलग ही चीज है, वो तो स्कैनर वगैरह के लिए है. तो trading view is both are different. Dinesh is saying, I like watching your videos as you seem very genuine pro trader to me, a intelligent, honest guy. Thank you so much, Dinesh. Thank you so much. क्या ही बोलूं मैं, आई एम स्पीचलेस टू हियर दीज वर्ड्स. लिटरली मैं बता रहा हूँ, आप जो पुराने लोग हैं, दोज हु आर विथ मी फ्रॉम द बिगनिंग, आपको पता होगा अभी पिछले कुछ दिनों में एकदम से फॉलोअर बढ़ गए हैं. तो जब फॉलोअर्स बढ़ते हैं ना तो आपको ही पता होगा फिर ट्रोलिंग वगैरह भी होती है. लिटरली वाज वेरी, मतलब मुझे काफी डर लग रहा था फॉर टेकिंग दिस वेबिनार कि फिर मतलब कमेंट्स आएंगे, को लोग कुछ भी लोग तो बोलते ही है ना. सो दैट्स व्हाई आई वाज फीलिंग अ लॉट, बट सीइंग योर कमेंट्स दिस इज वेरी लाइक very fulfilling for me. Thank you so much. Coupon code for iCharts, I'll share that in the Telegram. Conceptual Trader 030 ऐसी कुछ है, I'll share that in Telegram. Don't worry. Yeah, hand holding will be there for 1 month. एक जैसे ही आप वेबिनार में ज्वाइन करोगे ना तो आप एक ग्रुप में ऐड होगे, तो उस ग्रुप में मैं रहूंगा. I'll be hand guiding you guys through every process. जो भी चीजें मैं वेबिनार में बताता हूँ, एक भी चार्ट या कुछ भी डिस्कस होता है कंसेप्ट, वो सारा मैं आपको वहां पे हैंड होल्डिंग करके दूंगा. सारी चीजें समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. और 4 दिन बोलता हूँ सर, लेकिन मुश्किल मतलब एटलीस्ट 6 दिन लगते हैं, 5 दिन तो लगते ही हैं. पूरा पढ़ाने में 5 days आर रिक्वायर्ड एंड वन और 2 days मोर आर रिक्वायर्ड फॉर क्लियरिंग ऑफ डाउट्स एंड ऑल. ठीक है, तो वो पूरा महीने भर का प्रोग्राम रहता है. हर फिर उसके अगले संडे, उसके भी अगले संडे डाउट क्लियरेंस चलता रहता है. श्योर गोकुल, आई ट्राई टू डू दैट ना. जस्ट just DM me in Twitter. Gokul has joined the program and he is asking for the old videos. I'll do that. But DM in Twitter for this. All are BTST calls. Yes, all of them were BTST calls. Intraday पे नहीं था. तथागत ने he has commented, lots of love sir for your continuous efforts, added so much value to my experience. I am following you since long. Don't miss any single tweet of yours. Looking forward to learn more from you. After your teaching, I started to use Y data analysis. It really means a lot, guys, because यही तो है, अब इसके अलावा और क्या ही रखा है ना. And really it means a lot. Let me open I'm actually taking the, please provide link for signals and webinar. I'll do that in the Telegram channel. Thank you, sir, for the beautiful Sunday gift. It will enrich all of us. Thank you, Sakshi ma'am. Thank you so much. It really means a lot for me.
या थैंक यू दिनेश जी, अब तो कम्युनिटी बढ़ रही है, साथ के साथ थोड़ा सा डर भी लगता है, लिटरली मैं बताऊं डर लगता है। हालांकि ग्रोथ बहुत ज़्यादा है पिछले कुछ ही दिनों में, कुछ दिन पहले मैंने वो 4,500 का डाला था, अब तो 7,000 से भी ज़्यादा हो गए। तो डर भी लगता है कि इतने लोगों का एक्सपेक्टेशन पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा करके, बट एट द सेम टाइम इट फील्स रियली गुड। और जो आप लोग शुरू से हो वो तो फिर उसकी तो बात ही कुछ और है। ये आप ही लोग की वजह से हुआ है, आप लोग की दुआओं का असर है। संजीव जी सिंह, रियली सर यू आर सो जेन्युइन, थैंक यू सो मच संजीव जी। नहीं, लास्ट ऑफ मंथ में बीटीएसटी मत लो स्टॉक ऑप्शंस में, बिकॉज अगर फंस गए तो फिर डिलीवरी देनी लेनी पड़ जाएगी, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। नो बडी नोज माई नेम एक्चुअली, राम। लेट्स सी। अभी तो मैं बताया ना आपको, डर लगता है, ज्यादा लोग रहते हैं ना, डर लगती है चीजें, ठीक है। आप नाम दोगे अपना तो फिर लोग ट्रोल करने लग जाते हैं, तो इसलिए देखते हैं धीरे धीरे, अगर कंफर्टेबल होता हूँ तो फिर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, फिर एवरीथिंग विल बी देयर। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें भी, क्यूएनए में भी। डज एल्गो टेक ऑप्शन बायर्स एसएल एज द प्राइजेस आर रैपिड, टीएसएल लिटिल डिफिकल्ट टू होल्ड ड्यू टू स्लिपेज फ्रॉम ब्रोकर बाय एसएल। हाँ, टीएसएल थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, बट अगर करेंगे ना तो वही सबसे बेस्ट रहता है, तो कोशिश करनी है हमें, ठीक है। अभी कम कैपिटल में करिए। एल्गोस तो होते हैं मार्केट में, ऐसा नहीं बोलो नहीं होते हैं वो। स्टॉक ऑप्शंस में एल्गो का काम बहुत रहता है, वो बीच बीच में आकर के ना, गलती से भी आपने एक ऑर्डर लगा दिया बीच का, तो वो उठा के ले जाते हैं आपका उसको। तुरंत आपको लगता है यार ये हम तो प्रॉफिट में हैं, बट इमिडिएटली 1 या 2 रुपए नीचे आपका ट्रेड हिट हो जाएगा। और 1-2 रुपए स्टॉक ऑप्शंस के लिए बहुत होते हैं, मतलब 1-2 रुपए का अगर मूवमेंट आप स्टॉक ऑप्शंस में लूज करते हो तो दैट मीन्स यू आर लूजिंग 1,000 और 1,000, लाइक 4,000 5,000 ऑल्सो फॉर सम ऑप्शंस। जैसे वो पीएनबी का तो 60 पैसे का तो ऑप्शन ही था ना। तो इस टाइप की चीजें हैं, बट एट द सेम टाइम इट विल रिक्वायर प्रैक्टिस, एंड इफ प्रैक्टिस इज देयर एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। तो मैं उसको बताऊंगा डिटेल में वेबिनार में, पूरा लाइव मार्केट में दिखाऊंगा कि हाउ द एल्गोज आर वर्किंग एंड हाउ यू कैन डिसाइड दैट। 200 and 800 लेवल है इंपॉर्टेंट, बैंक निफ्टी 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 में भी है, या निफ्टी में भी है। आई डोंट नो व्हाई बट दिस हैपेंस अ लॉट एक्चुअली, दीज आर नियर अबाउट द बिग लेवल, तो थोड़ा बहुत जो मोमेंटम रहता है, मोमेंटम स्टेज देयर, सो इसलिए थोड़ा लेवल्स इट गोज अप टू दैट लेवल्स आल्सो। एंड yes, there is one query which is sometimes the single candle eat all the profit if we don't have trailing SL. Definitely, definitely. Single candle, वो SL hunt वाला candle रहता है. Long straddles are not that great to take because theta decay kicks in, wall crash kicks in. बहुत मुश्किल हो जाता है. Option buying अगर कर रहे हैं तो go with directional only, go for delta only. Today was more theoretical. Can we expect practical? Definitely, definitely. I know that थोड़ा सा theoretical ज़्यादा था, क्योंकि काफी चीजें बेस से बतानी पड़ती। क्या होता है, बहुत सारे लोग मतलब बिगिनर रहते हैं, बहुत सारे लोग एकदम न्यू रहते हैं, तो सबको लेके चलना पड़ता है यहाँ पे। वेबिनार में क्या होगा कि वंस आई क्लियर ऑल द बेसिस ना, ये जो सारी बेसिक बातें क्लियर करके बहुत हाई लेवल पे लेके जाऊंगा, इतने हाई लेवल पे लेके जाऊंगा कि यू विल से टू मी कि सर थोड़ा रुक जाओ और एक बार रिपीट करके समझाओ इस सारी चीजों को। जो मेन क्रक्स था वो तो बचा है ना ऑब्वियसली, अदरवाइज आई वुड नॉट हैव बीन आस्किंग यू गाइज द प्राइस ऑफ 9,700 फॉर दैट वेबिनार। अगर उतना वर्थ इट नहीं रहता तो फिर मैं क्यों ही बोलता। ठीक है, लॉट ऑफ थिंग्स आर रिमेनिंग इन द फॉर द वेबिनार, और एज वेल एज एलाइट क्लब सिग्नल्स। Appreciate your stamina. Thank you so much, Chirag. Thank you so much. Appreciate you guys for sitting with me for throughout the day. And thanks a lot, sir. I'll note all your input. I'll work on my psychology also from now onwards. This session has been the best till date to understand price action. Thanks a lot.
अगर सच में ये बात है तो फिर तो मैं आपको बस ये बोलूंगा कि प्राइस एक्शन का तो मैंने बिल्कुल 5% भी टच नहीं किया, बिकॉज इंट्रोडक्शन में ही टाइम खत्म हो गया। लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर जो कि मुझे आज भी बताना चाहिए था, बट टाइम नहीं मिल पाया। एंड आई विल बी डिस्कसिंग a lot more things about price action in the webinar. Okay, the actual webinar. डायरेक्शनल व्यू, इट इज योर स्ट्रेंथ। बहुत सारी चीजें एक साथ रन होती हैं तब जाके डायरेक्शनल व्यू बनता है भाविक, तो वेबिनार में बताएंगे। Very well explained and presented whether one is required to continue stay on screen while trading. If you are an option buyer, I suggest that when you are like, this is one more thing which I was telling about. If you are an option buyer, na, initial 1.5 hour and last के 1.5 hour, both of them are enough for making a fortune. दिन भर रहने की जरूरत नहीं है, शुरू के 1.5 घंटे, शाम के 1.5 घंटे, after 2 p.m. more than enough for making fortune, because volatility is very high at those times. और एज एन बायर वी नीड वॉलेटिलिटी इन आवर साइड ना, तभी आई भी बढ़ेगा, ऑप्शन प्राइसेस बढ़ेंगे, मोमेंटम आएगा। वी डिस्कस्ड अबाउट मोमेंटम इन प्राइस एक्शन, तो सारी चीजें रहेंगी, everything will be there which will work in our favor and will make very good money. In fact, I myself don't trade up after 11. 11 के बाद मैं इवन सिग्नल्स में भी ज्यादा ट्रेड वेड नहीं देता, और 2 बजे तक कोई ट्रेड नहीं रहता। ठीक है, तो आप ऑफिस गोअर हो तो भी, आप स्टूडेंट हो तो भी उस टाइम पे आप ट्रेड कर सकते हो, या अदर मॉर्निंग 1.5 hour, 1.5 hour एंड लास्ट का। Enjoyed the way you teached and learned, very friendly, and thanks for answering so many questions. Thanks for everything. Thank you, Vic. Actually, I would have answered a lot more questions, but I'm really feeling very terrible that I could not answer that, क्योंकि वो मीटिंग फिर क्लोज हो गई, तो उसमें जो क्वेश्चन थे वो रह गए, एंड वी स्टार्टेड दिस मीटिंग अगेन, तो फिर ये क्वेश्चंस नहीं है मेरे पास पुराने, एंड एट द सेम टाइम वी वर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम ऑल्सो, बिकॉज सो मेनी पीपल वर देयर, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल जाता है। I'll share that in the Telegram channel, don't worry. RSI, VWAP, anchored VWAP, moving average, EMA, Bollinger Band, stochastic RSI, MACD. I have learned about all those things. I have used them, but बहुत ज़्यादा कुछ किसी से फायदा नहीं हुआ। Instead, Y और प्राइस एक्शन से ही ज़्यादा फायदा होता है। Still, if I have to choose any one indicator, I'll be going with VWAP only. VWAP ही है जो थोड़ा बहुत आपको हेल्प करेगा, other is not. Anchored VWAP is something like कि आप एंकर कहाँ करोगे, that depends from person to person, so that gives a lot of discretionary effects. बाद में बोलना बहुत आसान है, ठीक है, मूव आने के बाद बोलना बहुत आसान है कि एंकर भी अकॉर्डिंगली मूव आया, बट नॉट बिफोर द मूव। What parameters to look for creating the daily watch list? Y as well as price action of that particular stock, not only just options Y as well as futures Y, वो सारी चीजों के बेसिस पे you can create the watch list. I'll actually make a thread on this also, कि what do I see and for creating the watch list. Bhavik is saying कि webinar was really awesome. Hats off to you. Hope we will get practical knowledge in the paid. Definitely you will get. ये बहुत सरफेस को ही स्क्रैच किया था सर मैंने, अब पता है, मतलब आपको भी पता है, और खुद सोचो कि अगर कोई बंदा किसी वेबिनार का, कई लोग उस वेबिनार को 12-12 हज़ार दे के भी ज्वाइन किए हैं, ठीक है, एंड इवन लाइक दो वो प्राइस अगर मैं रख रहा हूँ तो ऑब्वियसली आई विल हैव टू गिव समथिंग टू देम ना, तो सारी चीजें अभी ट्रेलर में नहीं बता सकते, एक्चुअल पिक्चर बाकी है अभी, और वहाँ बहुत सारी चीजें होंगी प्रैक्टिकल, और पूरा एक महीना रहेगा आपके साथ में, आपके पास में, यू विल गेट होल 1 month सिग्नल्स एज वेल एज एलाइट क्लब डिस्कशन विथ मी, तो वहाँ पे आप पूरा मेरा दिमाग खान, मतलब जो पूछना है पूछना, आई विल आंसर देम ऑल ऑफ थिंग्स वेरी पेशेंटली। ठीक है, तो बिल्कुल आप ये मत सोचो कि मैं आपके सामने रहूंगा पूरे 1 महीने, आपको हर चीज के बारे में बताऊंगा कि कहाँ मैंने क्या सोच के क्या ट्रेड लिया, कहाँ आपको क्या ट्रेड लेना चाहिए था, और कहाँ जो आपने ट्रेड लिया उसमें क्या गलती हुई, एवरीथिंग विल बी डेल्ट विद हिम। अगर वीकली सेशन में नहीं हो पाया तो वीकेंड सेशन में लेंगे। जैसे आज मैंने जो सेशन लिया ना, आप लोगों को लगा होगा कि सर दोनों सेशन एक साथ क्यों नहीं लिए, हिंदी इंग्लिश का, जैसे यही सेशन मैं हिंदी में लेने वाला हूं अगले वीक, तो एक साथ क्यों नहीं लिया, बिकॉज एलाइट क्लब का भी सेशन लेना है। कल मैंने एक्सटेंडेड सेशन लिया था एलाइट क्लब के मेंबर्स का, जो 80 मेंबर्स हैं एलाइट क्लब के, उनके साथ था, तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट अ लॉट मोर थिंग्स। ठीक है,
Thank you so much, Achal. You are saying that ki thanks for very insightful webinar. Looking forward for Monday trading with renewed confidence. Thank you so much. Thank you so much. I really am glad that you got this confidence. iCharts better or Opsta for analysis? iCharts is much better. Opsta is just for payoff diagrams, which you can create in Zerodha itself for free also. बाकी ऑप्स्टा जो है ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है, बट नॉट दैट मच फॉर अस. थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेटिव सेशन सर. थैंक यू सो मच सृष्टि मैम. थैंक यू सो मच. इट मीन्स ए लॉट. प्लीज एक्सटेंड द कूपन कोड टिल टुमारो. यस, इट हैज बीन एक्सटेंडेड. ठीक है, अभी ये रहेगा, 2-3 दिन तो रहेगा. यस, दैट इज अवेलेबल इन जीरोधा. 4 स्क्रीन इज अवेलेबल इन जीरोधा. बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है यार, एक ही स्क्रीन में भी चलेगा. आप क्या देखते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो देखने के बाद आपके दिमाग में क्या चलता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो ट्रेन योर ब्रेन. थैंक यू सो मच सुमित. थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड सर. Sorry, kind work sir. It's almost a full day free webinar, and your Twitter threads are also very helpful to gain the knowledge. Thank you so much. Serious learner will be obliged for sure. Thank you so much. Yeah, सही बात है, serious learner पे ही focus रहना चाहिए. और I joined late. Can you give the link of subscription? Yes, I will give the link for subscription. यही दे देता हूँ मैं एक बार. Just give me one second. एंड या आई चार्ट्स का भी डिस्काउंट कोड है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा. मुझे याद नहीं है अभी, वो है, मैंने जो आई चार्ट्स के ओनर है ना उनसे बात किया था डिस्काउंट कोड के लिए, और वो है हमारे पास. उसमें 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा. दैट आई विल शेयर, डोंट वरी. वेयर इज दैट, कहाँ है हमारा, ये है. तो वेबिनार ज्वाइनिंग का जो लिंक है वो ये है. और उसके बाद सिग्नल्स का है लिंक, ये है. एंड वी हैव वेबिनार का कूपन कोड है TCT4. तो वो डालेंगे तो 35% ऑफ मिलेगा आपको वेबिनार में. देन वी हैव सिग्नल्स, इसके 3 मंथ सब्सक्रिप्शन में भी ऑफ है. और उसके बाद फिर एलाइट क्लब है. अगर आपको डिस्कशन चाहिए, इफ़ यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी ऑन ए डेली बेसिस, तो फिर ये आप सिग्नल्स भी ज्वाइन करते हो, सॉरी एलाइट क्लब भी ज्वाइन कर सकते हो. अब ये चीज़ एक अच्छी आ गई क्योंकि रिगी वाले आ गए हैं साथ में. तो क्या है कि आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो. पहले क्या होता था कि वी डिड नॉट हैड दैट सपोर्ट, तो इसलिए मुश्किल होता था. नाउ यू कैन ज्वाइन ऑन एनी डे, और पूरा 1 महीने का रहेगा आपका, मतलब 1 महीने या 3 महीने. ऑन एंड दैट टू, इफ आई एम नॉट एबल टू टेक एनी सेशन ऑन एनी डे एट 9:30, आई विल एक्सटेंड योर सब्सक्रिप्शन बाय 1 डे. ठीक है, लेट्स से आई एम आउट ऑफ द टाउन और आई एम नॉट एबल टू टेक एनी सेशन और ऑल, तो वो आपका सब्सक्रिप्शन अपने आप एक्सटेंड हो जाएगा, जो सिग्नल्स हैं और एलाइट क्लब है उसमें. एंड वेबिनार पे जो है आपको फ्री में मिलेगा सिग्नल्स और एलाइट क्लब फॉर 1 मंथ. तो उसमें भी अगर मैं किसी दिन नहीं रहा, मैं भले ही मैंने सिग्नल्स में ट्रेड दिए हैं, बट स्टिल आई एम नॉट प्रेजेंट फॉर एलाइट क्लब सेशन, तो एलाइट क्लब वालों का एक्सटेंड हो जाएगा. ओके. और अगर ट्रेड नहीं दे पाया या आई एम नॉट एबल टू, कुछ दिन कुछ काम है, ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल, तो फिर वहाँ पे मैं एक्सटेंड होगा. बिकॉज द रोबोट्स आर देयर, दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग देयर. ज़ॉम्बी जी, आप बहुत दिनों से मुझे यू वर मैसेजिंग मी, आई थिंक यू आर दैट ना, तो आई विल रिप्लाई देयर, डोंट वरी. एलाइट एंड सिग्नल दोनों ज्वाइन किया हुआ है. थैंक यू सो मच. वहाँ पे बहुत सारी बातें होंगी. या श्रीकांत जी, आई चार्ट ओनर इज श्रीकांत. या श्रीकांत जी इज द आई चार्ट ओनर, उन्हीं ने कोड दिया था. After joining Signals Elite Club, can we follow you blindly? Actually, after you join Signals, एक चीज आपको बस करनी पड़ेगी, आपको रिस्क मैनेजमेंट अपने से करना पड़ेगा. ठीक है, तो जब आप सिग्नल ज्वाइन करोगे तो ऑफिशियली, तो मतलब 1 तारीख को आफ्टर द 28th का सेशन, आई विल बी टेकिंग 1 more सेशन. ऑल्दो वो है
एक बार ओरिएंटेशन सेशन मैंने ले चुका हूँ. स्टिल आई विल बी टेकिंग अनदर ओरिएंटेशन सेशन. तो वेयर आई विल डू कि आपको समझाऊंगा कि ट्रेड्स लेने कैसे हैं. ठीक है, एंट्री और स्टॉप लॉस वो मेरा प्रॉब्लम है. क्वांटिटी आप अपने अकाउंट साइज के हिसाब से, बस आपको क्वांटिटी देखनी है, तो वो कर लेंगे ना, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिटेबल होंगे, मतलब मंथ के एंड में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में रहेंगे. तो क्वांटिटी क्या लेनी है, कैसे लेनी है, वो मैं आपको समझाऊंगा. ठीक है, आज भी थोड़ा सा समझाया, बट दिनेश सिंह फंड इज शॉर्ट, एक्चुअली वेरी शॉर्ट, बट कभी भी अगर मार्केट में कोर्स करूंगा तो आपका ही करूंगा, ये प्रॉमिस. थैंक यू सो मच दिनेश, थैंक यू सो मच. अब मैं क्या ही बोलूं इससे ज्यादा. थैंक यू सो मच. For office goer do webinar recording will be available for that? Yeah, definitely. Webinar का recording आपके लिए available रहेगा पूरे, I think 3 months तो है ही, और अगर आपको और लगेगा तो we can increase that also. So that will be available to you. आप देख सकते हैं पूरा का पूरा webinar once that gets completed. For how much time you are trading, sir? अच्छा, so actually I am present in the market from last 10-12 years, from 2012 itself. 10 और 12 से उस वक्त से इंटरेस्ट था, बट नॉट दैट मच कैपिटल वाज देयर बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज स्टूडेंट. तो ऑन एंड ऑफ था, चीजें चलती थी. जब शेयर खान वगैरह में ट्रेड्स होते थे, आपको पता है उस वक्त तो इंटरनेट भी इतना मुश्किल था, सारी चीजें थी. और देन आई गॉट अ जॉब एंड आई like made a capital, and from last 4-5 years I am trading continuously. एंड जो स्ट्रेटेजीज वगैरह जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 4-5 साल में बनी है, जो वाइड डेटा रीडिंग की स्ट्रेटेजी. लगता था ना कि मतलब यार कोई स्टॉक अचानक से 10% आज मूव कर रहा है, तो क्यों मूव कर रहा है, कुछ तो रीजन होगा उसके पीछे. तो फिर वो वहां से ये सारा डेवलप हुआ. दिनेश इज सेइंग कि सबको फैमिली की तरह रखना है, इसलिए ये डर होता है. बेस्ट ऑफ लक, यू कैन मैनेज. थैंक यू सो मच दिनेश जी, थैंक यू सो. आपने बिल्कुल सही शब्दों में इसका कहा है ना. नॉर्मल एक फॉलोअर की तरह ट्रीट नहीं कर पाता, मैं हमेशा एक फैमिली मेंबर की तरह करता हूँ. ऑलवेज यू मस्ट हैव सीन दैट कि आई यूज द वर्ड ब्रो ओनली फॉर ऑलवेज. तो इसलिए डर तो लगता है, हाँ, कि आप लोग इतना टाइम दे रहे हो, वर्थ इट होगा कि नहीं होगा, दैट इज देयर. थैंक यू सो मच प्रदीप, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर वेबिनार एंड सिग्नल्स. थैंक यू सो मच प्रदीप, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड एट ऑल, दैट्स माय प्रॉमिस. डोंट वरी अबाउट रूलर्स. नो आई एम नॉट. थैंक यू सो मच संजय. द ओनली एंटीडोट फॉर द ट्रूलर्स इज द सपोर्ट. ठीक है, तो एक कोई बंदा ट्रोल करता है या कुछ अगेंस्ट में बोलता है तो 10 लोग खड़े हो जाते हैं. ग्रुप में भी होता है, जैसे गलती से अगर किसी ने कुछ बोल दिया कि सर ये क्या हो, तो एलाइट क्लब में तुरंत लोग खड़े हो जाते हैं कि सर आपका सब मतलब है, बहुत लोगों का सपोर्ट है. क्योंकि अब क्या ही बोलूँ, जो भी मैं करता हूँ लोगों को पसंद आ गया, तो इसका सपोर्ट है. आप सबका धन्यवाद है इसके लिए, थैंक यू सो मच. विश यू ऑल द बेस्ट एंड होपफुल यू विल रीच न्यू हाइट्स. थैंक यू सो मच संजय. एंड नहीं, ये नया वाला है जॉम्बी. यू हैव जॉइंड ए न्यू एलाइट क्लब. वो जो पुराना था वो मई से अगस्त का था, उसमें 80 लोग थे. अभी वो खाली है, जो आप ज्वाइन करो ना वो पूरा ही खाली है. सिग्नल्स भी अभी खाली है. उसमें जो नए लोग आएंगे वो आएगा, क्योंकि मैंने बोला ना रिगी का पेमेंट स्ट्रक्चर आया है, तो इसलिए न्यू चैनल बनाया गया है और न्यू ग्रुप बनाया गया है. पहले क्या होता था, मैं खुद ऐड करता था फिर रिमूव करता था, वो सारी चीजें देखना और वो एक्सटेंड वगैरह करना मुश्किल था. अब सब चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी, तो बहुत आसानी से हो जाएगा. ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना, जिस दिन मैं गलती से प्रेजेंट नहीं हूँ, वैसे यूजुअली होता नहीं है, बट अगर होता है तो फिर हम एक्सटेंड कर सकते हैं. फॉर द ट्रेड्स गिवन विल यू एक्सप्लेन लॉजिक. डेफिनेटली, वही तो है सेशन का, और किस बात के हैं पैसे, तो सारे पैसे तो उसी बात के हैं. मैं सब कुछ समझाऊंगा आपको कि ट्रेड लिया तो लिया क्यों, क्या देखा था उस वक्त. कई बार व्हाट हैपेंस ना कि व्हेन आई गिव द ट्रेड्स, तो उस वक्त मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ. जो भी वाई डेटा वगैरह उस वक्त रहता है, प्राइस एक्शन और वाई डेटा उस वक्त जो भी अवेलेबल रहता है, उसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ. वो शाम को आपको समझाता हूँ कि देखो इसमें ये चीजें थी, इसलिए हमने ये ट्रेड लिया. जैसे अदानी पोर्ट्स में कल समझा रहा था बैठ के, अदानी पोर्ट्स में समझाया. फिर उसके बाद बैंक निफ्टी का मैंने समझाया, कल का जो लाइट क्लब सेशन लिया था उसमें समझाया कि बैंक निफ्टी क्यों फॉल हुआ.
ठीक है, एक्चुअली बैंक निफ्टी इसलिए फॉल हुआ था, अभी आप लोगों को समझा देता हूँ मैं यहाँ पे। व्हाट हैपेंड ना इन बैंक निफ्टी यस्टरडे कि 39,500 का जो लेवल है, इसमें ए वेरी ह्यूज सपोर्ट वाज देयर, a lot of like put writing was there at 39,500. Okay, so people were expecting that कि ये उससे ऊपर जाएगा, ठीक है। और what happened, जब ये यहाँ से बाउंस आया, पुट राइटर एग्जिट होना चालू हुए, और द मोमेंट लग रहा था कि यार मतलब ये क्योंकि बुलिशनेस थी ना इन द मार्केट फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज, सो इसलिए पीपल हैव रिटर्न ए लॉट ऑफ पुट्स एट दीज लेवल्स। द मोमेंट इट ब्रोक दैट, दिस कैंडल ब्रोक दैट लेवल, वो सारे पुट एग्जिट होने चालू हैं, दैट वाज विजिबल वेरी अपेरेंटली। और जब हमने ईओडी सेशन लिया था ना यहाँ पे बैंक निफ्टी का, मतलब एलाइट क्लब सेशन लिया था 18 को शाम को, तो हमने देखा था कि द इंडिविजुअल बैंक्स डेटा वाज वेरी नेगेटिव, एचडीएफसी बैंक डेटा एंड एक्सिस आईसीआई, ये सबका बहुत नेगेटिव था। कुछ स्टॉक थे जो न्यूट्रल थे, बट बुलिशनेस किसी में नहीं थी। So that's why I was expecting a bearish side move, इसलिए जो है मॉर्निंग में कुछ ट्रेड नहीं दिया था। Even after this fall, I was waiting for 39,500, इसलिए कोई ट्रेड नहीं था। Instead we were managing our BTST, इसमें I think प्रॉफिट हुआ था, गुजरात गैस है कुछ, तो मुझे याद नहीं आ रहा। So the moment it broke ना, everybody started बहुत, क्योंकि people were not expecting it will go upwards to that level, and उसके बाद फिर ये फॉल होना चालू हुआ अच्छा खासा, कवरिंग होते गए एंड इट फेल डाउन लाइक एनीथिंग। और वही बताया ना, अडानी और इसका बहुत बड़ा रोल था। अडानी क्या है, इतना ऊपर जा चुका, अदानी अंबानी की जो काफी फाइट चल रही है नाउ डेज, तो वो भी एक बहुत बड़ा रोल क्रिएट हो रहा है फॉर दीज थिंग। अडानी पोर्ट्स में आप देख सकते हो मोमेंटम किस तरीके से इंक्रीज हो रहा था, लुक एट द रेंज इंक्रीज। और ये फिर यहाँ पे क्लाइमेक्स कैंडल फॉर्मेशन, और ये भी क्लाइमेक्स कैंडल फॉर्मेशन है, बट इसको फॉलो थ्रू मिल गया, दिस गॉट ए फॉलो थ्रू, बट ये इसको नहीं मिला, तो यहाँ से रिवर्सल आ गया। लुक एट द वॉल्यूम, वॉल्यूम्स वर आल्सो इंक्रीजिंग। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर है ना। तो इस टाइप की चीजें होंगी, आपको एलाइट क्लब में समझाया जाएगा, और सारी चीजें मतलब आपको बताऊंगा मैं जितना पॉसिबल है। Abdul is saying very humbled and exhaustive derivative trader. Happy to know you, sir. Thank you so much, Abdul. इतना मतलब मैं लिटरली बताऊं, ये जो सेशन था ना, ये इसलिए लिया गया क्योंकि बहुत सारे नए लोग थे हम अभी अपने ट्विटर फैमिली में, तो वो सब मुझे जानते नहीं है, तो एक था कि उनसे भी मुलाकात हो जाएगी सबसे। अब आप लोगों को भी सपोर्ट मिल गया है, जो नए लोग हैं उनका ना, तो आई एम बिकम वेरी कॉन्फिडेंट, जो अब अगला सेशन जो भी होगा, आई बी मच मोर कॉन्फिडेंट देन दिस। लिटरली मुझे डर के मारे नींद नहीं आ रही थी रात में, क्योंकि इतने सारे लोग रहेंगे तो हाउ थिंग्स विल प्ले आउट, बट योर सपोर्ट इज देयर एंड विच इज द बेस्ट थिंग, सो नाउ यू विल सी माई कॉन्फिडेंस इन। If I take subscription of Signals, then will I get the mentorship of Elite Club as well, or do I need to take separate membership for Elite Club? You will need to take separate mentorship of Elite Club, because there are a lot of people ना जो दोनों नहीं लेना चाहते, ठीक है, because they don't have time for daily Zoom session watching or and all. They are happy with the profits only. तो उनके लिए सिर्फ Signals है, and those curious mind who need to learn about all those things, उनके लिए फिर Elite Club. But Signals तो सभी के लिए रहेगा। Where to see PCR data live real time and how to use it? PCR data is not that great for you, so बहुत ज़्यादा नहीं सब मतलब चीज़ें पता चलती है, बट वो मैं बता दूंगा कहाँ पे दिखता है, ठीक है। Right now, no plans of repeating this webinar, Chirag. Recording will be available for sale later after Diwali and all. अभी तो कुछ नहीं है, ठीक है। आप maybe I will repeat this in month of December also, like that. अभी नहीं। अच्छा, you bought it. That's great, Chirag. Welcome aboard. Where can we get the PPT slide? I'll share that in the Telegram channel. सब चीजें Telegram पे आएंगी। Concept. There is one question कि sir please talk about buyer versus seller in stated quantity. Charting पे नहीं आ पाएगा, concept पे आएगा। Go charting is also good for order flow data, market profile के लिए. So you can use any one of them.
So I have read almost all the comments now, and is the credit card acceptable for payment? I think it should be. The Rigi people were saying that उसमें है. Just go through the links, and अगर होगा फिर वो हो जाएगा सर. Very informative webinar. Can we have it trail in evening class of 9:30? If it is possible. Trail means ट्रायल. ओके, ट्रायल अभी इस बार तो नहीं है मैम. नहीं मैम, नहीं सर, पराग. विल थिंक अबाउट दैट. लेट मी टेक नेक्स्ट वीकेंड सेशन, उसके बाद फिर वी कैन प्लान लाइक दिस. सेंसिबल में भी है, सेम वही डेटा अवेलेबल है सेंसिबल में भी. ठीक है, आपके पास सेंसिबल है तो आप उससे भी रीड कर सकते हो. सेंसिबल इज गिविंग सेम डेटा. That will be great learning experience for all. That's the like theory, Raj. Earlier what used to do ना कि हम जो है सिर्फ वो करते थे, क्या कहते हैं, आई यूज टू टेक ओनली वेबिनार. बट देन पीपल आस्क्ड मी अबाउट दैट कि सर जो डेली बेसिस पे ट्रेड्स है वो किस बेसिस पे लिया आपने और क्या था लॉजिक. तो वहां से फिर एलाइट क्लब गॉट जनरेटेड. अब उसके बाद नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सेपरेटिंग सिग्नल्स फ्रॉम एलाइट क्लब. तो इसलिए जो दोज हु आर like who wants to learn the logic and wants to learn the process, तो उनके लिए एलाइट क्लब है. एंड those who wants to earn only, तो उनके लिए सिग्नल्स है. एंड बोथ आर फाइन. ठीक है, आप दोनों साथ में भी ले सकते हो या फिर सिर्फ सिग्नल ले सकते हो. अगर सिर्फ एलाइट क्लब लेने का कोई सेंस नहीं बनेगा तो उसके लिए प्लीज आई विल अवॉइड, बट कैन गो विथ सिग्नल्स एज वेल एज एलाइट क्लब. Will you explain logic in daily session? Definitely, I'll explain all the logics in the daily session. So I think all the questions are any combined offer for all. संजीव जी अभी तीनों को मत लीजिए ना, आप सिर्फ वेबिनार ले लीजिए, उसमें आपको दोनों मिल जाएंगे. मतलब आप वेबिनार भी अटेंड कर लेंगे और उसके बाद फिर आपको 1 महीने का एलाइट क्लब और सिग्नल भी मिल जाएगा. और अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप उसको 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर लेना एट द एंड ऑफ 1 मंथ. एम आई क्लियर? हाँ ना, तीनों को एक साथ मैं कर सकता था लेकिन वो कोई मतलब नहीं है ना अभी. मतलब अगर आप नए हैं और वाई डेटा वगैरह के बारे में ज़्यादा उतना आइडिया नहीं है तो इट्स बेटर टू गो फॉर वेबिनार. एंड आई एम श्योर कि वहाँ से आप 1 महीने के लिए अगर आप मेरे एलाइट क्लब के पार्ट बनोगे तो फिर आप लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप के लिए बोलोगे. ऐसा कई लोगों ने कहा है. या वही पल्स में भी है, वही डेटा रीडिंग तो है. कहीं पे भी, कहीं से भी आप वही डेटा लो, उससे प्रॉब्लम नहीं है. उसको रीड कैसे करते हो, दैट इज द मेन क्रक्स विच आई विल शेयर इन द वेबिनार. वाई पल्स में है, इवन आपका उसमें है निफ्टी वाई ट्रिक है. ट्रेडिंग टिक करके एक साइट है, उस पर भी आता है वाई डेटा. इवन एनएससी की साइट पे भी आता है, बट वही थोड़ा सा मुश्किल रहता है. रवि शेखर, इज देयर ऑप्शन फॉर लाइफ टाइम मेंबरशिप? नहीं रवि जी, अभी तो इतनी ही चीजें हैं जो हैं. एंड आई एम रियली ग्लैड टू हियर दिस. ठीक है, एंड इन फ्यूचर वी कैन प्लान फॉर दिस ऑल्सो. वैसे एक चीज है कि इतना एफर्ट लगता है ना इसमें कि मेरे फैमिली वाले अलाउ नहीं करेंगे हर दिन तुम सेशन लो करके. नहीं सर, मैं अभी गारंटी नहीं दे सकता ना, क्योंकि जो एलाइट क्लब वाली चीजें हैं ना एक्चुअली वो काफी टाइम लगता है. मैं बोलता 45 मिनट हूँ, कई बार 1-1 घंटे 1.5 घंटे भी सेशन ले लेता हूँ. तो घर वाले बहुत कि व्हाट इज दिस यार, यू गेट ग्लूड टू स्क्रीन थ्रू आउट द डे एंड इन द इवनिंग आल्सो. सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर. लेट्स सी हाउ थिंग्स प्लान आउट. Hello, sir. Purchase subscription for webinar 4.0. Thank you, San A. Thank you so much. I'll see you on the weekend next to that, next to next. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Trust me, it will be worth your time. जहाँ आज खत्म किया है, ये सारी बातें भी रिपीट करूंगा जो बताया है उसको, और उसका फिर आगे और भी चीजें बताएं. ये क्या, आई विल डिस्कस एवरीथिंग, डोंट वरी. बस इसी बात के लिए ही जो एलाइट क्लब के मेंबर बनेगा वो लेफ्ट टाइम बना. तो सर कुछ मिलेगा तभी तो ना, मतलब उनको लगेगा कि है कुछ अच्छा तो. डेफिनेटली आई हैव द कॉन्फिडेंस. ठीक है, आप एक बार आओगे तो फिर साथ में मतलब छोड़ोगे नहीं साथ. स्टिल लेट्स सी, लेट्स टेक ए चांस, है ना. वेबिनार के लिए आइए, अगर
वाई डेटा वगैरह लर्न करना है तो वेबिनार के लिए आइए, बहुत अच्छा रहेगा। और अगर जानते हैं वाई डेटा वगैरह के बारे में, बेसिक्स क्लियर है, तो फिर सीधे सिग्नल और उसके लिए आइए, एलाइट क्लब के लिए तो भी चलेगा। बट कोशिश रहेगी कि अगर थोड़ा भी डाउट है या कुछ है तो एक बार वेबिनार के लिए आइए, मौका दीजिए। 1 महीने के लिए तो बिल ही रहे उसमें, है ना, एंड विल आई विल पिक अप फ्रॉम देयर, डोंट वरी। द आइडिया इज टू बिल्ड अप ए कम्युनिटी, है ना। एलाइट क्लब का नाम ही इसलिए रखा गया है, क्लब जो है उसके नाम में वो इसीलिए रखा गया है ताकि एक कम्युनिटी ऐसी बिल्डअप हो जहाँ पे बहुत, कई बार लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हर बार सारे ट्रेड वहीं पकड़ता हूँ। एलाइट क्लब में भी जो मेंबर्स है ना, वो अपना स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं कि सर ये जो वाई डेटा है ये हमें लग रहा है कि बहुत बुलिश है। जैसे आई सी टी सी, आई वॉज नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू आई सी टी सी फॉर लास्ट फ्यू डेज, लेकिन एक मेंबर है हमारे ग्रुप में, उन्होंने ही पूछा कि सर इसका डेटा तो बहुत स्ट्रांग लग रहा है, और उसके बाद आईआरसीटीसी में ब्लास्ट हुआ था। जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ लिटरली, तभी आपको मतलब वे इज दैट, ये है एलाइट क्लब ग्रुप। अब इसमें आएगा, लेट मी सर्च इट। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस, सो दैट अगर हो तो मैं दिखा देता हूँ अभी अगर खुलता है तो। uh, mm, 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 mm. तो ये देखिए आप, आईआरसीटीसी में जो था, इसमें क्वेश्चन था कि आ, या हियर इट इज, ये देखिए आप, ठीक है, जस्ट सी दिस, यू विल गेट अ लॉट ऑफ आइडिया। तो ये एक, हाँ, एक तो ये कोड है कंसेप्चुअल ट्रेडर 0930, ये हमारा कोड है 20% डिस्काउंट का चार्ट्स में, तो ये नोट डाउन कर लीजिए, इसको मैं शेयर भी कर दूंगा। ये क्वेश्चन था, सर इफ यू आर फ्री कैन यू चेक हिंडाल्को एंड आईआरसीटीसी चार्ट, तो इज इट गुड बाय सर व्हेन वी कैन एंटर आईआरसीटीसी में 677, ये इन्होंने वही चार्ट भी दिया था प्राइस एक्शन के चार्ट में, बिकॉज आई वाज आउट देयर, तो इसलिए। एंड आईआरसीटीसी में 680 का मैंने लेवल दिया था, एंड उसके बाद व्हाट हैपेंड, मैंने बोला था कि व्हेन आईआरसीटीसी ब्रेक 680, उसके बाद इट कैन एक्सप्लोड लाइक एनीथिंग। जैसे एक बार और दिखा देता हूँ, ये देखिए, वेयर इज दैट यार, हियर इट इज। तो ये मेरा आंसर है इन आईआरसीटीसी 680। हिंडाल्को वाज करेक्ट, आईआरसीटीसी में जो 677 था उसको मैंने 680 के लिए बोला था, बेस्ड ऑन दिस डेटा रेटिंग पार्ट, कि जो भी डेटा रेटिंग था उसके बेसिस पे मैंने बोला था। एंड आईआरसीटीसी ब्लास्टेड लाइक एनीथिंग एंड ही मेड वेरी गुड मनी आउट ऑफ इट। एक बार और यही सेम चीज हुई, लाइक एक और क्वेश्चन आया जब आईआरसीटीसी का कुछ दिन के बाद, ये सारा जो है 18 अगस्त का है। कैन यू शेयर व्यू ऑन आईआरसीटीसी, आई एम होल्डिंग कॉल्स, शुड आई कैरी इट एज आईआरसीटीसी एज वेरी बुलिश, यस यू कैन ब्रो। ये 18 का आप देख सकते हो, 2 तारीख 2 बजे के अराउंड का है, 2:17 के आसपास। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 18 को ही देखो आप, 2 बजे के आसपास मैंने ये व्यू दिया, और ये आप आधे घंटे के बाद आईआरसीटीसी का क्या हाल हुआ, ठीक है, इट ब्लास्टेड लाइक एन। तो इट्स ए कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, ठीक है, इसलिए लाइट क्लब का एग्जिस्टेंस है, इस पे उनके भी व्यूज रहते हैं, वो ला लेके आते हैं कि दीज गाइज आर प्रोज, वो वेबिनार अटेंड करके उन लोगों ने पूरा सब समझ लिया है डेटा रीडिंग, तो वो लेके आए उन्होंने, फिर मैंने अपना डेटा देख करके मैंने कंफर्मेशन दिया, एंड यू कैन सी हाउ मच आईआरसीटीसी ब्लास्टेड दैट डे, एंड ही मेड ए वेरी गुड मनी इन दैट ट्रेड एक्चुअली। तो वही था कि
सो आई होप यू गाइज लाइक दिस थिंग ऑल्सो। तो यही सारी चीजें हैं सर एलाइट क्लब में, है ना, और सिग्नल्स में। विल मीट देयर एंड विल कैरी फॉरवर्ड दिस डिस्कशन देयर ऑल्सो। अगले वीक भी मैं एक बार लूंगा हिंदी वाला। जस्ट ज्वाइन द वेबिनार पेड। थैंक यू विक, थैंक यू सो मच, सी यू देयर। नॉर्मल VSA फ्रॉम जीरोधा इज और ओके, और वी नीड टू बाय प्रीमियम वर्जन ऑफ ट्रेडिंग व्यू फॉर। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करना। VSA जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें सिर्फ वॉल्यूम जो आएगा जीरोधा, जीरोधा में या ट्रेडिंग व्यू में जो बेसिक वॉल्यूम आएगा, उसी के बेसिस पे हम लोग अपना वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस करेंगे। वॉल्यूम प्रोफाइल नहीं है ये कि उसके लिए हमें अलग से इंडिकेटर या सब्सक्रिप्शन लगे। जितना अवेलेबल है फ्री में उसी से बहुत अच्छा खासा हो जाएगा। सिग्नल्स प्लस एलाइट क्लब के लिए सर कोई कूपन कोड अभी नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी उसमें क्या किया है ना मैंने, जो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन उसको डिस्काउंट दिया हुआ है, तो उसमें फिर अलग से कूपन कोड लगाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए ऑलरेडी बहुत हेविली डिस्काउंटेड है 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन। नहीं नहीं नहीं, वेबिनार अटेंडीज विल बी एडेड इन द एलाइट क्लब एंड सिग्नल्स व्हेन द वेबिनार एंड्स। क्योंकि हाँ, 1 मंथ एक्सेस टू एलाइट क्लब एंड सिग्नल इज फ्री विथ, बट एक बार वेबिनार को एंड होने दो, तभी आपको बहुत अच्छी चीजें समझ में आएगी। अभी से ऐड कर लूंगा तो एलाइट क्लब का डिस्कशन भी समझ नहीं आएगा, सिग्नल भी समझ नहीं आएगा, तो फिर बाद में प्रॉब्लम जाएगी, है ना। So, इसलिए थोड़ा सा वेट करो, कीप a little पेशेंस, आई विल टेक केयर। वो बहुत सोच के मैंने उसको बाद में ही दिया है। एक बार वेबिनार फिनिश हो जाए ना तो सारी बातें आराम से समझ में आएंगी, इसलिए। Thanks, sir, for the wonderful session. Although I was not able to attend full, appreciate your time and value. Will join you soon. Thank you so much, Sanjay. And I'll upload the recordings also so that you get all the things from there. हाँ बिल्कुल प्रेजेंट कर देंगे। क्वेश्चन जो पराग जी कह रहे हैं कि जो भी ऑफर्स हैं आपके सिग्नल्स और एलाइट क्लब वगैरह जहाँ जो भी है सब बता दो, टेलीग्राम में बता देंगे सर। Please come up for combo offer 6 months, 12 months and lifetime. If you need sales and marketing assistant, I am ready to work on part time and you can pay me as you wish. हाँ हाँ, नहीं नहीं संजय जी, ऐसा कुछ असिस्टेंट की तो जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। और अब तो रिगी वाले हैं, उनका पेमेंट सब वगैरह है, तो काफी हेल्प है। देखते हैं, इन फ्यूचर विल प्लान फॉर 6 मंथ 12 मंथ्स। देखेंगे बिल्कुल, आई विल बी देयर। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, आप लोग का सपोर्ट रहता है और माहौल अच्छा रहता है, कंटिन्यूस सपोर्ट बना रहता है, तो फिर हमेशा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और थैंक यू सो मच गाइस। ठीक है, अब तो मेरे ख्याल से आप लोग भी थक गए हो दिन भर से सुनते सुनते। लेट्स एंड दिस सेशन नाउ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीक। जिनका भी कुछ छूट गया था या जिनको हिंदी में सुनना है, वो अगले वीक आइए, क्योंकि अगले वीक में हिंदी में ये सेशन लूंगा। और श्योर श्योर चिराग, वेबिनार का पूरा रिमाइंडर आएगा वहाँ पे। एंड सब स्टार्ट विल बी 3 वीक्स इन द फ्यूचर। नहीं चिराग, आई थिंक आई शुड नॉट स्टार्ट राइट अवे, क्योंकि वो फिर ना एकदम कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपको और कंसेप्ट नहीं समझ में आएंगे। थोड़ा सा एलाइट क्लब का डिस्कशन जो रहता है ना, बहुत हायर लेवल पे चलता है। एकदम एक बार चार्ट देख के मैं बोल देता हूँ दिस इज बुलिश एंड ऑल, तो वो आप फिर थोड़ा लैग करोगे, उसमें मुश्किल होगा। इसलिए लेट्स वेट सम डेज। श्योर श्योर, आई विल पोस्ट द रिकॉर्डिंग एंड ऑल। थैंक यू सो मच दिनेश जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आई रियली लव्ड रीडिंग योर कमेंट्स एंड नाउ लेट्स एंड दिस सेशन गाइस। ठीक है, बहुत कुछ और भी बातें करनी थी, समय की वजह से नहीं हो पाया। आई विल डू अनदर सेशन some other day. Sumit is saying whether it will be Hindi or English, I'll be attending for sure. It adds value listening to you. Thank you so much, Sumit. Thank you so much. आप में से जिनको भी हिंदी आती है, प्लीज अगली बार दोबारा आइए, वहाँ पे आई विल डिस्कस लॉट मोर न्यू एग्जांपल्स। जैसे अभी जो एग्जांपल मैंने डिस्कस किया ना रानी पोर्ट्स, ये रिसेंट था इसलिए उठा लिया। बैंक निफ्टी रिसेंट था, उठा लिया।
अगली बार कुछ और उठा लूंगा मैं, तो आपको वो चीजें समझ में आएंगी, और एक लाइव मतलब सामने आपकी दिखाऊंगा कि क्या कब क्या डेटा है, मतलब एटलीस्ट प्राइस एक्शन तो बता ही सकता हूँ कि कब क्या रीड करना है, कहाँ क्या डेवलप हो रहा है, ठीक है। वही डेटा के लिए विल नीड लॉट ऑफ टाइम इन द वेबिनार। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। Yes, from 12th of September, you will get access to a light club as well as signal. Thank you so much, guys. Thank you so much for joining me today. Thank you so much for giving me this opportunity to discuss all these things with you. I know that you guys are already a very good trader, but if this discussion helps you in becoming even 1% better, then I will be very, very happy. Thank you so much. Let's end this session now. Have a very good evening and enjoy the day. Thank you so much, guys. I'll see you in the threads and in the next webinar. Thank you.